Kashmir is known as a paradise on earth, but Azad Kashmir, the region under Pakistani control, is fast turning into a hell. People of the region face neglect and discrimination by the Pakistan government. To add to the woes, the Azad Kashmir government presented a 47.3 billion rupees budget for 2010-11 with a record deficit of more than 17.6 billion rupees. The budget proposes rupees 20.4 billion for non-developmental expenditures and rupees 9.55 billion for development activities. It looks impressive on paper, but in reality, the development fund for 2009-10 has not yet been allocated. Roads in Azad Kashmir are in bad shape, education and health have been neglected and unemployment is rising. मुजफ्फराबाद के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट भी उसका आगाज ही नहीं हो सका। मास्टर प्लान पे अमल दरामद तो दूर की बात, यहाँ की सूरत तो यह है कि हमारी जो जीटी रोड्स हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। आप चेहरे में चले जाएं तो इस तरह महसूस होता है कि किसी सहरा में आ गए हैं। Azad Kashmir Assembly is a puppet regime controlled by Islamabad and has no option but to present a deficit budget. All this has badly affected the rebuilding process of Azad Kashmir, hit on October 8, 2005 by a devastating earthquake. Though Pakistan's Earthquake Reconstruction and Rehabilitation Authority is responsible for reconstruction work in Azad Kashmir, but corrupt officials have misused the earthquake funds. It has fueled anger among the people in the region. इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स शुरू थे वो तमाम के तमाम डिस्टर्ब हो गए, बंद हो गए। हत्ता की सूरत ये है कि जो ठेकेदारान हैं वो अपनी मशीनरी भी आज़ाद कश्मीर से शिफ्ट करने के दर पे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। और बाकी जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उनमें से स्वाय तुर्कुश प्रोजेक्ट्स के एरा सिरा के ज़ेर निगरानी जितने भी प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे उनमें से कोई एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो मिसाल के तौर पे भी पेश किया जा सके कि ये कंप्लीट हो गया है। Of the 4 million people who inhabit the region, 9 out of 10 live in extremely impoverished conditions in rural areas. The region has huge potential in terms of tourism and available resources. Unfortunately, Pakistan has been exploiting the available resources without paying back anything. The time has come for Azad Kashmir to be liberated from Pakistan and for Kashmiris to decide their own fate.